आज हम करेंगे कंपनीज ऑडिट। नया चैप्टर एक हम करेंगे कंपनी ऑडिट। पहला 2 पेज दिया हुआ है, पूरा सेक्शन हमारा। फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करता है? तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। First auditor shall be appointed by board of director within 30 days of registration of company. कंपनी रजिस्ट्रेशन के within 30 days board of director फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करेगा. If board fails, board shall inform the member shall within 90 days at an EGM appoint the first auditor who hold office till the conclusion of first EGM. फिर इसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करता है, वो उसके बारे में बताता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 7। फर्स्ट ऑडिटर से भी अपॉइंट बाय CAG अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर को कितने दिन में? विदिन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इफ CAG डज नॉट अपॉइंट द ऑडिटर, जब CAG नहीं कर पाता है तो बोर्ड विल अपॉइंट विदिन नेक्स्ट 30 डेज। इफ बोर्ड फेल्स, अगर बोर्ड भी नहीं कर पाता है तो बोर्ड से इन्फॉर्म द member shall within 60 days at an EGM appoint the first auditor who hold office till the conclusion of first EGM. till conclusion of first EGM तक ये फर्स्ट ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस। फिर आती है बात अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर की। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ये केस में गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट होगी सब्सिक्वेंट ऑडिटर? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर विल बी मेड बाय CAG within a period of 180 days from the commencement of financial year, who shall hold the office till the conclusion of next AGM. फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की 180 डेज़ के अंदर ही CAG एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगी जो कि होल्ड करेगी नेक्स्ट AGM तक उस ऑफिस को। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगी? अपॉइंटमेंट विल बी एट फर्स्ट AGM, जो भी पहला AGM होगा कंपनी का उसमें अपॉइंटमेंट होगी। अब वो कब तक होल्ड करेगी? टिल कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। हेयर आफ्टर टिल कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th AGM इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? ओमिटेड बाय कंपनी एक्ट 2017। रिटन कंसेंट, ये कंडीशंस हैं। रिटन कंसेंट बिफोर अपॉइंटमेंट कंपनी शैल ऑब्टेन रिटन कंसेंट फ्रॉम ऑडिटर, सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर। अपॉइंटमेंट करने से पहले कंपनी ये सब रिटन कंसेंट लेगी ऑडिटर से और एक सर्टिफिकेट लेगी ऑडिटर से। सर्टिफिकेट से इंडिकेट, सर्टिफिकेट में क्या इंडिकेट रहेगा? वेदर ऑडिटर हैड सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 141। इंटीमेशन टू ROC को भी इंटीमेट किया जाएगा। कंपनी से इन्फॉर्म द ऑडिटर एंड ROC अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर विदिन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। रूल 4 में बोला गया इंटीमेशन टू ROC जो होगा ए फॉर्म ADT 1 में होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे रूल 3-4 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। इसमें क्या बोला गया है? मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होगा अपॉइंटमेंट ऑडिटर का? कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है ऑडिट कमेटी बनाने की सेक्शन 177 में, अगर हाँ तो ऑडिट कमेटी शैल कंसीडर द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। देन ऑडिट कमेटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ पर्सन टू बोर्ड फॉर देयर कंसिडरेशन। अगर बोर्ड एग्री करता है तो क्या होगा? प्लेस द मैटर फॉर कंसिडरेशन बाय द मेंबर इन AGM। अगर बोर्ड डिसएग्री करता है बोर्ड सेल रेफर बैक टू द मैटर टू ऑडिट कमेटी फॉर रिकंसिडर। रेफर बैक कर देगा ऑडिट कमेटी को फॉर रिकंसिडरेशन करने के लिए। ऑडिट कमेटी एग्री फॉर रिकंसिडरेशन तो दोबारा से वो रिकमेंड करेगी बोर्ड को, फिर बोर्ड एग्री करेगी, डिसएग्री करेगी। और ऑडिट कमेटी डिसाइड नॉट टू रिकंसिडर, अगर ऑडिट कमेटी रिकंसिडर नहीं करती है तो बोर्ड विल रिकॉर्ड द रीज़न फॉर डिसएग्रीमेंट
बोर्ड रिकॉर्ड करेगी रीज़न, बोर्ड मेक इट्स ओन रिकमेंडेशन देगी, फिर प्लेस द मैटर फॉर कंसिडरेशन बाय मेंबर इन एजीएम, फिर उस कंसिडरेशन को एजीएम में प्लेस करेगी। और अगर ऑडिट कमेटी नहीं बनाती है, अगर कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है ऑडिट कमेटी बनाने की, तब इस केस में क्या होगी, बोर्ड विल कंसिडर द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। बोर्ड कंसिडर करेगी और उसी चीज़ को प्लेस द मैटर फॉर कंसिडरेशन बाय द मेंबर इन एजीएम, एजीएम में कर देगी मेंबर को कंसिडर करने के लिए। इस तरह से अपॉइंटमेंट होगी ऑडिटर का। यहाँ है कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार। सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम ऑडिटर शैल ऑब्टेन द फॉलोइंग, दैट द इंडिविजुअल और द ऑडिट फॉर्म एज द केस में बी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। फिर दूसरा है द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज एज पर टर्म्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट। तीसरा है द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट। List of proceeding against the auditor or the audit firm or any partner of the firm with respect to disciplinary matter as disclosed in the certificate is true and correct। ये सारी conditions हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हो गया, ये हो गया। फिर आगे है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर में क्या है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 बोलता है लिस्टेड कंपनी एंड अदर प्रिस्क्राइब कंपनी शेल नॉट अपॉइंट एन इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन वन टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। लिस्टेड कंपनी या फिर अदर प्रिस्क्राइब कंपनी, जो कि रूल 5 में दिया हुआ है अदर प्रिस्क्राइब कंपनी कौन कौन सा है, और इंडिविजुअल जो है एज ऑडिटर 1 टर्म्स 5 कंसेक्यूटिव ईयर से ज़्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता है, और एक ऑडिट फॉर्म है एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन 2 टर्म्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर नहीं ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट कर सकता है 2 टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स के लिए। तो लिस्टेड कंपनी और अदर प्रिस्क्राइब कंपनी कौन कौन सा है, अदर प्रिस्क्राइब कंपनी है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 50 करोड़, company not covered above if public borrowing from bank and financial institution public deposit greater than 50 equal to 50 करोड़। फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या है, इंडिविजुअल ऑडिटर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन सेम कंपनी फॉर 5 years आफ्टर completing of tenure। Audit firm not eligible for reappointment as auditor in same company for 5 years after completing of tenure। Second proviso, audit firm having a common partner with audit firm whose tenure has just expired as an audit of appointment shall not be appointed as auditor of same company for a period of 5 years। Third proviso, every company existing before commencement of this act shall comply with the requirement of section 139 subsection 2 within a period which shall not be later than the date of first AGM after 3rd year from the date of commencement of this act। Fourth proviso, section shall not prejudice the right of company to remove auditor, right of auditor to resign। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 कहता है मेंबर में रिजॉल्व द फॉलोइंग, रोटेशन ऑफ ऑडिटिंग पर्सन ऑफ हिज टीम एट सच इंटरवल एज मे बी प्रिस्क्राइब, दैट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन 1 ऑडिटर। सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 कहता है सीजी में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ रोटेशन फॉर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। रूल 6 प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ रोटेशन, मैनर ऑफ रोटेशन दिया हुआ है रूल 6 में। For calculating period of 5 year 10 years period served prior to commencement of this act shall also be considered। Individual auditors audit firms shall not be eligible for appointment as auditor for a period of 5 years if it belongs to same network to whom retiring auditor belongs to। same network होगा तो नहीं reappoint होगा। break in the term should be for a continuous period of 5 years। A partner in charge of audit firm who
certify the financial statement of the company if retired from the said firm and join another firm. Such other firms will also be ineligible to appoint an auditor for a period of 5 years. फिर उसके बाद है रूल, ये हो गया। फिर उसके बाद है अदर प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 9, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 139 सब सेक्शन 8। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या है, ड्यू टू रेजिग्नेशन अगर होगा तो बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 13 days। सच अपॉइंटमेंट शैल बी अप्रूव इन जनरल मीटिंग convened within 3 months of recommendation of board। अदर रीजन में क्या होगा, बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days। गवर्नमेंट का क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी बी फिल्ड बाय CAG विद इन 30 days। इफ CAG डज नॉट फिल द कैजुअल वैकेंसी इट विल बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन नेक्स्ट 30 days। Reappointment of auditor, a retiring auditor may reappoint at AGM if he is not disqualified under law, not unwilling to continue, and no special resolution has been passed, appointing someone else as auditor, providing expressly that a retiring auditor shall not be reappointed. No auditor appointed at AGM. If no auditor to appoint at AGM, existing auditor will continue. Recommendation of audit committee, when a company is required to constitute an audit committee under section 177, all appointment including filling of casual vacancy shall be made only after considering the recommendation of audit committee। फिर उसके बाद है रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। पहले देखें रिमूवल बिफोर एक्सपायरी। रिमूवल बिफोर एक्सपायरी रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। प्रीवियस अप्रूवल ऑफ CG इन प्रिस्क्राइब मैनर, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ CG चाहिए। बिफोर टेकिंग एनी एक्शन ऑडिटर कंसर्न शुड बी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड। Application to CG should be made within 30 days of passing a board resolution in form ADT2 within 60 days of approval by CG, approval of CG, convene a general meeting to pass special resolution। अपॉर्चुनिटी बीइंग हेयर देना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, उसके विद इन 30 days एप्लीकेशन टू CG देना पड़ेगा, फिर CG फिर 60 days के अंदर जनरल मीटिंग पास करना, जनरल मीटिंग में SR पास करना होगा। For removal before expiry, filling of statement in case of resignation, auditor who has resigned shall be within 30 days of resignation statement in prescribed form। Rule 8 बोलता है 83 में to company and ROC also CAG in case of government company indicate करना है, indicating the reason and other fact relating to resignation। अगर नहीं करता है तो फाइन है for non compliance 50,000 not exceeding audit fee। In case continuous failure, further penalty for 500 per day after first, during which such failure continues, subject to a maximum of 2 lakh। Special notice, special notice shall be required to pass the special resolution at AGM, providing that retiring auditor shall not be reappointed or to appoint as auditor any person other than retiring auditor। Copy of notice to be sent immediately to concerned auditor. Auditor has a right of representation. Copy of notice of representation need to be sent to every person to whom notice of AGM was given। Auditor may demand for reading the representation in meeting। Representation need not be sent or read out meeting if on application of company or other person tribunal pass such order। Here a direction for change of auditor, tribunal may by order direct the company to change its auditor either suo motu or an application made to it by the CG or by any person concerned if it is satisfied that the auditor has acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud। If the application is made by CG and tribunal is satisfied
that any changes of auditor is required, tribunal shall within 15 days of receipt of such application make an order that he shall not function as an auditor, and CG may appoint another auditor in his place. An auditor against whom final order has been passed by the tribunal under section 140 subsection 5 shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company for a period of 5 years from the date of passing of the order, and auditor shall also be liable for action under section 447. फिर आगे है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर. Eligibility of to be appointed as auditor. A person shall be eligible for appointment as an auditor only if he is a CA. A firm whether majority of partner practicing in India are qualified may be appointed by its firm name as an auditor. A firm including LLP, if appointed as auditor, only partner who are CA shall be authorized to act and sign on behalf of firm. Person not eligible for appointment and Rule 10. Body corporate other than LLP, officer or employee of the company, partner, employee of officer, employee of the company, personal relative partner who is holding any security or interest in the company, subsidiary company, holding company, associate or subsidiary of same holding. Any person relative partner is indebted greater than 5 lakh in the company, subsidiary, holding, associate, subsidiary of same holding. Any person relative partner has give a guarantee in connection with indebtedness of third person greater than 1 lakh in the company, subsidiary, holding, associate, subsidiary of same holding. No disqualification if relative hold any security in the company of face value up to 1 lakh. Where a person or a firm having business relationship with company, subsidiary, holding, associate, subsidiary of such holding or associate company, ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. ए पर्सन हुज रिलेटिव इज़ अ डायरेक्टर और इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और KMP. A person who is in a full-time employment elsewhere, or a person holding appointment as auditor or more than 20 company other than OPC, dormant company, small company and private company having paid up capital less than 100 crore. A person who has been convicted of an offence involving fraud and a period of 10 years has not elapsed. Any person who directly or indirectly render any services referred to in the section 144 to company or its holding company or its subsidiary company. With vacation of office, if after appointment as an auditor incur any disqualification mentioned in section 141 subsection 3, he shall vacate the office and such vacation shall be treated as casual vacancy. The specified number as per ICA notification 30 audit whether in respect to private company or other company with the exception of OPC and dormant company. अब देंगे पावर एंड राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ कंपनीज ऑडिटर क्या क्या है. राइट्स ऑफ ऑडिटर है राइट ऑफ एक्सेस. एवरी ऑडिटर shall have right of access all times to the books of accounts and voucher of the company whether kept at register office of the company or at any other place. रजिस्टर ऑफिस में हो या कहीं भी हो, उसके पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट और वाचर को एक्सेस कर सकता है. राइट ऑफ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. Every auditor shall be entitled to require from the officer such information and explanation as he may consider necessary for performance of his duties as auditor. Right of lien. An auditor may exercise right of lien subject to the following condition. Document must belong to the client who owes the money.
These documents must have come to the possession of auditor on the client authority. Auditor can retain such document only if he has done work on such document on which fee has not been paid. ESB of ICA held that a CA cannot exercise lien over client document record for non-payment of his fees. फिर क्या है, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में है इंक्वायरी इनटू प्रोप्राइटरी मैटर. Loan and advances are properly secure and terms are prejudicial. Book entries are prejudicial. Share debenture and other security are sold at a price less than acquisition cost in case of non-banking and investment company. Loan and advances made are shown as deposit. Personal expense charged to revenue account. Cash has actually been received on shares allotted for cash if not received. Correct position shown in books and balance sheet. फिर यहाँ पे था एक चीज़ और यहाँ पे छूट गया. राइट ऑफ ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी प्रोवाइजो. Auditor of the holding company shall have right of access to a record of all its subsidiary and associate company in so far as it relate to consolidation of its financial statement with that of its subsidiary and associate company. और यहाँ पे है reporting over accounts and financial statement. That to the best of auditor information and knowledge, the accounts and financial statement gives a true and fair view of the state of company affairs as at the end of its financial year and profit and loss and cash flow for the year. फिर रिपोर्टिंग देखेंगे. रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3. Whether auditor has obtained all necessary information for the audit, whether proper books of account have been maintained, whether branch audit report have been received and manner of dealing with it, whether balance sheet and profit and loss account agree with books of account, whether financial statement comply with AS, comment on financial state transaction or matters saving any adverse effect on functioning of the company, whether any director is disqualified under section 164 subsection 2, qualification or adverse remarks with respect to maintenance of accounts, whether IFC with reference to financial statement are in a place and effectively operated, other matter as prescribed. Rule 11 क्या कहता है? Whether impact of pending litigation on financial position is disclosed, whether provision for material foreseeable losses on long-term contract made, whether there is any delay in transferring amount to IEPF, whether management represent that no fund have been advance invested to or in any other entity with understanding that it shall lend invest in other entities identified in any manner by or behalf of company or provide any guarantee security or other like on behalf of ultimate beneficiary, whether management represented that no fund have been received from any entity with understanding that it shall lend invest in other entity identified in manner by or behalf of funding party or provide any guarantee security or the like on behalf of ultimate beneficiaries. Auditor consideration that management representation made under this rule does not contain any material misstatement, whether dividend declared or paid during the year is compliance with section 123 of the Companies Act 2013, whether company has used accounting software which has a feature of recording audit trail facility and the same has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software and the audit trail features have not been tampered with and it has been preserved for the record retention. Reason for reservation: for every matter reported with qualification, auditors listed the reason thereof. ये था पावर एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़. फिर पावर राइट्स एंड ड्यूटीज़ आगे भी है तो ये हम लोग देख लेंगे. प्रोविज़न related to government company. Duties of auditor of government company. CAG direct the auditor the manner in which accounts are to be audited. Auditor reports will include direction issued by CAG, action taken thereof, its impact on account and financial statement. Supplementary audit section 143 subsection 6. Within 60 days of
Receipt of audit report. CAG have a right to order for supplementary audit of financial statement by such person as authorized by him. Test audit. Section 143 subsection 7. CAG may, if considered necessary by an order, cause test audit of accounts of government company. Provision related to branch audit, SC and CARDO. Section 143 subsection 8. Audit of branch account will be discussed separately in chart 6.11. Section 143 subsection 9. Every company shall comply with auditing standard. Section 143 subsection 10. CG may prescribe the SC in consultation with NAFRA. Section 143 subsection 11. CG may direct that auditor report shall include a statement on such matter as specified in order issued by its CARO 2016 CARO 2020. Reporting of fraud. Reporting under section 143 subsection 12. Fraud involving prescribed amount committed by officer or employee should be reported to CG in prescribed manner. Fraud below prescribed amount should be reported to audit committee or board of directors. Details of such fraud need to be disclosed in board's report. Nature of fraud with description. Approx amount involved. Parties involved if remedial action not taken. Remedial action taken. Manner of reporting of fraud under section 13. Fraud greater than equal to 1 crore reported to audit committee, board of directors within 2 days, seeking their reply within 45 days. If reply received, forward his report, reply and comment on reply to CG within 15 days. If reply not received, forward his report to CG alone with that reply not received. Report shall be sent to Secretary MCA in a sealed covered by register post with acknowledgement due or by speed post followed by an email in confirmation of the same. Report shall be in letterheads of the auditor containing postal address, email address and contract telephone number or mobile number and be signed by the auditor with his seal and shall indicate his membership number. Report shall be in form of statement. Formality 4. Fraud reported to AC Board of Directors shall be disclosed in board report. If any auditor, cost accountant or company secretary in practice do not comply with provision, he shall in case of listed company be liable to a penalty of 5 lakh and in case of any other company be liable to a penalty of 1 lakh. आगे अदर प्रोविज़न है में सेक्शन 142 रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर का बात करता है. अथॉरिटी टू इट्स फिक्स रेमुनरेशन शैल बी इन जनरल मीटिंग में होगा फिक्स और इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइन देयर इन मे बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इफ अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. फर्स्ट ऑडिटर केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेगा और बाकी केस में जनरल मीटिंग होगा. एलिमेंट ऑफ रेमुनरेशन शैल इंक्लूड ऑल एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑडिट and any facility extended to auditor does not include remuneration paid for any other services. सेक्शन 144 में ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज कौन सी सर्विसेज नहीं कर सकता है. अदर सर्विसेज दैट मे बी रेंडर एज प्रोवाइडेड अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी. सर्विसेज दैट कैन नॉट बी रेंडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी. अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का सर्विसेज नहीं दे सकता है. इंटरनल ऑडिटर का सर्विसेज नहीं दे सकता है. डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का नहीं दे सकता. एक्चुरियल सर्विसेज नहीं दे सकता. इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे सकता. आउटसोर्स फाइनेंशियल नहीं दे सकता. मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकता. अदर प्रिस्क्राइब सर्विसेज नहीं दे सकता है. सेक्शन 145 Section 145 Signing of audit report shall be in accordance with Section 141 subsection 2. Section 146 Attending of general meeting. All notice and other communication of general meeting shall be forwarded to auditor. Unless exempted, auditor shall attend either himself or through his authorized representative any general meeting. Auditor shall have right to be heard at such meeting on part of business which concern him as auditor. Punishment for contravention over the company and office in default. Violation of Section 139
to 146. Company fine from 25,000 to 5 lakh. Option in default, fine from 10,000 to 1 lakh. Over the auditor, violation of section 139, 144, 145, fine from 25,000 to 5 lakh or 4 times the remuneration, whichever is less. In case of willful default, imprisonment up to 1 year and fine from 50,000 to 25 lakh or 8 times the remuneration, whichever is less. If auditor convicted under section 147(2), he shall be liable to refund the remuneration and pay for damages. Other provision.